everyone, today we will be studying graphical method for solving linear equation in two variables. Suppose you have two friends, let us say Ram and Rohan. ठीक है, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है बट उन दोनों में एक प्रॉब्लम हो गई, दोनों में एक लड़ाई हो गई, राइट? यू नीड अ सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम, है ना? उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कब आएगा? कोई भी प्रॉब्लम होती है, दो पार्टीज में कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसका सॉल्यूशन कब आता है? जब दोनों किसी कॉमन पॉइंट पे सेटिस्फाई कर, राइट? अगर वो किसी एक पॉइंट पे सेटिस्फाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट हम बोल देते हैं एटलीस्ट दे हैव वन कॉमन सॉल्यूशन, है ना? हम ये काम कर लेते हैं तो हमारी लड़ाई सॉल्व हो जाएगी। अगर बाय चांस वो बहुत सारे पॉइंट्स पे एग्री कर रहे हैं तो हम खुशी हो जाते हैं दैट यस वी हैव सो मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है लड़ाई कभी भी दो फ्रेंड में सॉल्व ही नहीं होती, क्यों? बिकॉज दे नेवर फाइंड अ कॉमन पॉइंट। कोई भी ऐसा कॉमन सॉल्यूशन नहीं निकल पाता, उनको कोई भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता जिससे वो दोनों सेटिस्फाई करें, राइट? तो उस केस में क्या होता है? प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। सिमिलर इज द केस विद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है, लेट अस से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। एवरी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट। एंड हाउ डू लाइंस बिहेव व्हेन सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली? जब भी हम ग्राफिकली इक्वेशंस को बना के देखते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं? फर्स्टली इज दैट जब भी मैं उन लाइंस को ड्रॉ करूंगी, दे हैव अ कॉमन पॉइंट, वन कॉमन सॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। वो लाइंस कौन सी लाइंस होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन दे इंटरसेक्ट विद अ पॉइंट, सो वी हैव वन यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड केस क्या होता है? द लाइंस दे नेवर मीट एट अ पॉइंट, कोई भी कॉमन उनका पॉइंट है ही नहीं। तो इस केस में क्या बनती है? पैरेलल लाइंस। विच लाइंस? पैरेलल लाइंस। और सॉल्यूशन क्या होता है? नो सॉल्यूशन। दो फ्रेंड्स राम एंड रोहन ने लड़ाई करनी, किसी भी कॉमन पॉइंट पे वो एग्री ही नहीं कर रहे हैं, तो कभी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। So that is case 2, parallel lines. The lines will never intersect. Case 3, coincident lines. कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं दोनों फ्रेंड्स में, ऐसी लड़ाई होगी थी, ओवरलैपिंग लाइंस होती है। इस केस में क्या होता है? इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। जितने भी पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट करेंगे, दो लाइंस है, जितने भी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे उतने सॉल्यूशन होंगे, बिकॉज यहाँ पे दोनों लाइन जो है जो इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस? इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। नाउ लेट अस सी दिस केसेस वन बाय वन. So first case is, suppose you have two equations, x minus 2y is equals to 0 and 3x plus 4y is minus 20 is equals to 0. Let us plot the graphs. तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? First of all, let us write this in simple form. x is equals to 2y. तो पहले मैंने यहाँ x लिखा, then I have written y over here. Now if y is 0, x is 2 into 0, which is 0. If y is 1, x is 2 into 1, it is 2. If y is 2, then x is 2 into 2, which is 4, right? Now let us make the graph of another line, which is 3x plus 4y is equals to 20. Let us write it in this form. Okay? Again, I am making the table. This is x and this is y. Now, first of all, let us take x as 0. When x is 0, so 4y is equals to 20. So y is equals to 5. Now, let us take y as 2. When y is 2, so 4 into 2, that is 8. Now 20 minus 8, that is 12. So x is equals to 4. You can find more solution also. Minimum 3 solutions you should find. Okay. So now let us plot the graph of this. First point, 0, 0. So x is 0, y is 0. That means the origin will come over here. Now x is 2. So 2 steps towards x. And y is 1. Y is 1 over here. So this is another point. Now next is x is 4 over here and y is 2 over here. So the graph of this would be like this, something like this, right? Always draw it using your scale. Now next, x is 0 over here and y is 5 over here, this point. Now next, x is 4 over here and y is 2, so this point. Now let us plot the graph like this. So what do I get? There are two lines. वो obviously होनी थी, right? और वो lines क्या कर रही हैं? एक single point पे intersect कर रही हैं.
तो जब भी लाइन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। ओके, सो दिस वाज द केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसमें लाइंस को जस्ट स्टडी करूं प्रॉपरली, तो जस्ट बाय सीइंग एट द लाइंस मैं बता सकती हूँ कि वो इंटरसेक्टिंग होंगी या वो पैरेलल होंगी या फिर वो कॉन्सिडेंट होंगी, कैसे? लेट अस चेक, लेट अस कंपेयर दिस विद a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, and this with a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. इस केस में a1 की वैल्यू क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 1, a1 is 1, b1 is -2, c1 is again 0. इस केस में a2 is equals to, what is coefficient of x, 3, b2 is equals to 4, c2 is -20. Now let's take the ratio, a1 upon a2 is equals to 1 upon 3, b1 upon b2 is equals to -2 upon 4. Let me simplify it, it is -1 upon 2. इसमें मैंने क्या ऑब्जर्व किया, इसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया कि a1 upon a2 that is not equals to b1 upon b2. राइट, आई जस्ट चेक, मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया था तो मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिला था, और इसमें मैंने जब कंपेयर किया तो आई गॉट दिस, दैट मींस जो रेशियोज है दे आर नॉट इक्वल्स. सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, व्हेनेवर आई सी दिस थिंग, जब भी आई सी टू इक्वेशन और अगर मैं उनके कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ये आ जाए जस्ट बाय लुकिंग एट द इक्वेशन, दैट मींस कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन. ओके, नाउ नेक्स्ट केस, case number 2. So case number 2, first equation I have 2x plus 3y minus 9 is equals to 0. Let us write it in a more simplified way. So 2x plus 3y is equals to 9. Now let us plot the table, x and y. Let us take x as 0, then y is 3. Okay. Now let us take some other value. Let us take y as 0. वो y को 0 लेके देख लेते हैं. When y is 0, then x is 9 upon 2. Good value, right? Now let us take x as 2. Let us try to take x as 2. So that will be 9 minus 4. 9 minus 4 is 5. 5 upon 3. This is not a good value. Let us take one more value. Let us take x as 3. When x is 3, so 2 into 3 6. 9 minus 6 is 3. Y is 1. This is the table. है ना? Minimum 3 points you should plot. You can plot more than that even. Okay. Now let's take another one. 4x plus 6y is equals to 18. X and y. Again I'll plot the table. X and y. Let us take x as 0. Then y is 6y is equals to 18. So 3. Now let us take y as 0. So x is equals to 18 upon 4. When I cancel it, I get 9 upon 2. This I will, now let us take y as 1. When y is 1, so 18 minus 6, that will be 12. 12 upon 4, that is 3. This is the table for this equation. Now let us plot the graph. Let us start with first equation. First point is 0, 3. X value is 0 and y is 3. This point. Next is x is 9 by 2. 9 by 2 is 4.5, somewhere here. And y is 0. Y is 0 matlab don't move, stay here at 4.5. Next is, this I will not write because 5 by 3 is tough to make. X is 3 and y is 1. So move 3 towards x and y is 1 over here. Now let us plot the graph of this. So graph of this would be something like this. Okay. Now let us make the graph of another equation. So I have x is 0 and y is 3 this point. Very good. X is 0, no, y is 9 by 2 which is 4, x is 9 by 2 which is 4.5 and y is 0. So this point. Now again x is 3 and y is 1, this point. Now again when I draw the graph, they are coincident lines, right? That means they are overlapping, one line over the other. So how many points are there on one line? Infinitely many. So how many solutions? Infinite solutions exist, right?
So similarly, as have done last time, this time also we can understand. Just look at the ratio and we can tell infinitely many solutions. How? Let us compare it. This is a1x plus b1y plus c1 is equals to 0. Let us name it as a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. So a1 is equals to 2, b1 is equals to 3, c1 is minus 9, a2 is 4, b2 is 6, and c2 is minus 18. Let's compare a1 upon a2, that is 2 upon 4, which is 1 by 2. b1 upon b2, that is 3 upon 6, which is again 1 by 2. Good. c1 upon c2, that is minus 9 upon minus 18. Now minus minus plus. And I cancel it. I again get 1 upon 2. So what am I getting? This is 1 by 2. This is 1 by 2. And this is also 1 by 2. So that means I get this. बेसिकली हुआ क्या था, वो दोनों लाइन सेम ही थे. फर्स्ट लाइन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, आई गेट सेकंड लाइन. So the lines were coincident because the lines were exactly same. फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या सेकेंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, या फिर किसी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट इक्वेशन आ जाए. ऐसी लाइन, ऐसे टाइम पे कौन से सोल्यूशन होते हैं? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, राइट. तो कभी भी हमें ऐसा दिखे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या होगा? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस. ओके. नाउ केस थर्ड का ग्राफ आई हैव ऑलरेडी प्लॉटेड. These are the two equations and this was the graph which I got. तो इसमें you might have observed कि लाइंस क्या है? पैरेलल है. They will never intersect at a point. क्योंकि वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आएगा, किसी भी कॉमन पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करेंगी वो. सो दैट मीन्स द लाइंस आर पैरेलल. तो जब कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं, तो क्या है? नो सॉल्यूशन. इट इज अ सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन. अब इसकी रेशियो क्या होती है? अगर मैं कंपेयर करूंगी तो आई विल सी कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल तो आ जाएगा, but that will not be equals to c1 upon c2. So this is the condition for parallel lines. So summary is, so there are three cases. First case में आपको चेक करना है a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल अगर नहीं आता तो यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस. अगर सब रेशियोज इक्वल है, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, तो infinitely many solutions, coincident lines. थर्ड केस इज पैरेलल लाइंस. a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल तो आ गया, बट आगे वो c1 upon c2 के इक्वल नहीं हो गया. इट फेल टू बी इक्वल टू c1 upon c2. तो क्या आएगा? नो सॉल्यूशन. Okay. Thank you. Practice a lot because practice makes perfect. And do like, share and subscribe this channel. Thank you.